Hello and welcome. My name is Zaffar Iqbal and you are watching The Mojo Story. The murder of 19-year-old Ankita Bhandari, who's working as a receptionist in a Uttarakhand resort, which is owned by a politician's son, has triggered massive anger and outrage across the country. The teenager was allegedly killed for refusing to offer special services to the guests. The death is now being probed as a case of murder with alleged involvement of a BJP leader's son. The BJP has suspended Vinod Arya, whose son Pulkit is the owner of the resort where Ankita worked. Three persons, including Pulkit, have been arrested by the police in connection with Ankita's death. But days after the incident, the resort was demolished with bulldozers. The district magistrate rather, has reportedly said that we are not aware on whose order the demolition was carried out using a bulldozer. To speak on this, we're joined by an eminent panel today. We're joined by Yashovardhan Azad, who's a former IB official. We are also joined by Ranjana Kumari, Director CSR Center for Social Research, and also joining us Ashwini Sahi, who represents the BJP. Ashwini जी, अगर आपसे शुरू करूं, तो किसके ऑर्डर पे ये डिमोलिशन होगी, जो ये रिजॉर्ट को डिमोलिश किया, ये किसने ये ऑर्डर दिया था? ये तो उसका वहां का प्रशासन का काम है, प्रशासन ने डिमोलिश कराया था और अभी आपसे मैं सुन रहा हूं कि किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ। ये तो उस दिन प्रशासन का आदेश था। प्रशासन के आदेश पर जैसे त्वरित कार्यवाहियां होती हैं, गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी होने के साथ साथ ये डिमोलिश किया गया। डिमोलिश तो इसलिए किया गया ना कि ये बताया जाता है कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, एक सही तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था और उसकी बुनियाद पे इसको डिमोलिश किया। आज तो ये कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, तो कई साल से ये रिजॉर्ट चल रहा है, तो आज ही क्यों डिमोलिश हुआ? ये तो देश में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है जो गिराई जाती है, उसी दिन मीडिया सवाल उठाती है और आप हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उसी दिन आपको पता चलता है कि इसमें क्या हुआ था। बात पहले से जो प्रक्रिया अगर चल रही होती है तो वो पता नहीं, आपको भी नहीं पता होता, इसलिए आप डिस्कशन नहीं करते हो। और उस दिन कोई घटना हो जाती है तो एक चर्चा का विषय हो जाती है, और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की नेता कर रहे हो, तो एक चर्चा का विषय हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे घबराने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है बड़ी मजबूती से करती है और न्याय संगत काम करती है। हमारे ऊपर बहुत से आरोप लगे, पीएफआई के आरोप लगे हमारे ऊपर, जो है अभी देखिए किस तरीके से जो है 370 हटाया गया। मोदी जी की चक्की है, ये पीसती है, भले थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पीसती जरूर है, ये जान लीजिएगा। ये इस पर चलते हैं हम लोग, और जो भी होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस दुखद घटना, बहुत जघन्य अपराध हुआ है। इस दुखद घटना के पीछे चाहे विनोद आर्या का बेटा हो या कोई भी हो, जो अपराधी होगा वो बचेगा नहीं। ये अब न्यायालय के उसमें है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनके साथ जो न्यायपूर्वक कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, सरकार मांग करेगी कि न्यायालय उनको दे। It's not a coincidence, the BJP representative says, but you saw from those visuals the building was demolished with bulldozers. Purely from the point of view of investigations, Yashovardhan Azad, don't you think that crucial evidence would have been lost and destroyed in that drive? In English or Hindi? Can you hear me? Can you hear me? Yes, yeah. I can hear you. Please speak on. Yeah, can I speak in English or Hindi? As you wish, sir. I'm comfortable in both, so whatever you like. Anyway, see, there are some इसमें कुछ बुनियादी गलतियां हुई हैं इसके अन्वेषण में। सबसे पहली गलती तो ये है, जो कि एक सिस्टमिक गलती है, और सिस्टमिक गलती ये है कि पूरे उत्तराखंड में एक रेवेन्यू पुलिसिंग चल रही है। ये पुलिसिंग के साथ एक मजाक है, और ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिसिंग डाली थी, जहां की रेवेन्यू अधिकारी जो हैं वहां के पुलिस का कार्य करते हैं। ये भद्दा मजाक है। 2000 में जब उत्तराखंड की नई सरकार बनी तो ये अपेक्षा की गई थी कि वो एक रेवेन्यू पुलिसिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, and it has now become a joke. So the first thing I would say is that when the information went to that so-called revenue official, that Patwari or Rajaswa Nirikshak as you call him, yeah, he did a gumshuddhi report and then he ran away.
Then he was not there at all. Later on, when the got to know the information, the biggest cardinal mistake was they did not take these people on police remand. Now, that is, if once you had taken the police remand, had taken the accused to the spot, there you would have got the primary evidence. The primary evidence would have been, from where she was pushed, where the grass was uprooted, where that can be matched with the shoe, print or the skin, etc. What was the impact? When was the impact? When did the death take place? Now, this is the crucial evidence which was lost at that particular time, because these people were sent on judicial remand, that is straight to the jail. Now, the demolition which you are talking about, which took place in the resort, that is secondary evidence, but it is of crucial importance because it talks about mobiles, WhatsApp chats, and proving this circumstantial evidence would have been very strong to back the primary evidence. And the sanctity of the case property, which is this place, is so important. It is listed in 451 CRPC. Therefore, it should have never been demolished. I don't know whether it was demolished on purpose or it was just demolished out of hubris to show that anything wrong and we just blast the whole thing down. But lastly, let me tell you another thing. The whole resort business in Uttarakhand is something very, very serious to look at. The resorts, they are lying in an ecologically fragile area. They are violating all norms. They have been set up by the so-called, people who are connected with power, whether rich or whether politicians. I myself stayed in one of the resorts near Corbett, where all the resorts there in the area were violating the sound barrier, everything like that. And I wrote a letter to the Chief Secretary, to the DGP, to the PCCF. There was not a single reply which came. So I would say this is a very, very serious breach of, humanity, I would say, where this girl is exploited. Let's take that to Ranjana Kumari. You raised a very important point about revenue policing. Well, this is rather surprising that in today's age there is this revenue policing, and according to reports, the police were initially very reluctant to take the complaint, and then after the DM intervened, then they took the complaint, and a lot of time got wasted, and the parents had to run from pillar to post. Do you think that is the problem? That the problem started from there only? The person involved, Pulkit, went to police, filed a complaint, and then when the parents met with the police, it took them a lot of time to file the complaint. They had to go to the DM, and the DM intervened, and then finally some action was started. And when it came in the news, in social media and mainstream media, then perhaps there was more focus and the case was taken forward. Well, you see, this is not first time that we are seeing that there is delay in response to such serious, heinous crime. And because why it is delayed? Because in every case when we have heard about, girls being raped, women have been violated, because politicians' children or politicians themselves are involved. And that is true of the ruling party. Look at all the cases in UP, what happened from Hathras to, I don't want to count all that at this stage. Now, second thing, which is very important, 6 days were lost because here is someone son of Uttarakhand was someone who was involved in the whole thing. Now, second issue is botching up of the investigation. You can see that when the building was built, nobody cared whether illegal or legal. The moment this kind of incidents happens there, it becomes an illegal building, and they want to destroy all the circumstantial evidence. You heard from Yashu that all these things were done. This first of all, precious time was lost and the evidence was destroyed. So botching up has already started, you see, and then they are arrested. There are many ways that they can be just released on bail after some time, and nobody will be caring about what really happened to this girl, and her family will be running from pillar to post for justice. This is what justice means for our,
That's a very important point that you raised, that after some time the news will fall from the headlines, and perhaps these are the local leader having a lot of clout, and perhaps that could influence the investigations. Uh, No, let me Ashwini just Shahid, complete one yeah, more point. yeah, Let me just complete yeah, just one more point I okay, want to say here is that yeah, in this case, especially when the whole news broke, it took almost 6 days, as we all know. But yeah. what has happened to that Patwari? Why only he has been suspended? Why doesn't he also, he should be brought into it, because it was his responsibility to inform the local. First of all, system needs to be reformed and all that. We don't know ever politicians will do all that. But at the same time, why has he been just left by not getting him arrested, and he's just been suspended? What kind of a situation they are trying to create? They are just trying to create one after the other step is in the direction to somehow get these people out of the net. They are murderers, they are killers, they are rapists, but they will go scot-free because we are seeing that whole, the whole story is weaved in such a manner that they will be maybe unintentional, that they managed to kill this girl. There was no intention for it. There was no, we don't know, no, nothing has come out of this whole thing. She was pushed, her body was Let lying in the let let water. Her body was yes. lying in the water for 6 days, and there people was, Yes. the whole, what kind of a medical or postmortem report are we getting? Are they saying that the body was for 6 days in the, nobody knows. So this is Let something let where let girls are not let getting justice in this country. let अश्विनी शाही रेस्पॉन्ड. ये बात तो है कि आपने विनोद आर्या को एक्सपेल किया है, लेकिन क्या ये काफी है? देखिए जफर जी, क्या काफी है क्या नहीं है, आखिर संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि विनोद आर्या जी को भारतीय जनता पार्टी तुरंत फांसी की सजा दे दे? जैसा कि अभी रंजना जी ने कहा कि जस्टिस ही नहीं है इस देश में। रंजना जी, कम से कम कानून पर भरोसा तो कीजिए, हिंदुस्तान की रहने वाली हैं आप, और कानून पर भरोसा नहीं। कहा अगर कुछ इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों का देश है, चीजें होती हैं, इस पर पुलिस नहीं, बताने की जरूरत नहीं है रंजना जी। रंजना जी, आपने कहा है हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान में रहने के बाद आप कह रहे हैं न्याय नहीं है, तो आप जैसे लोगों को के कारण ही आप नहीं आप लोगों के कारण ही अराजकता बढ़ रही है। आप लोग अराजकता को बढ़ावा दे रही हैं, आप लोग प्रश्रय दे रही हैं। शर्म आपको आनी चाहिए, एक महिला होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से आप कर रही हैं, संविधान पढ़ी लिखी महिला होने के नाते इस तरीके की बात करिए। अरे डूब मरिए, आप जाकर लटक जाइए, मैं क्या कह सकता हूँ? आप शब्द बोलेंगी तो मैं बहुत ज्यादा पर्सनल। अश्विनी शाही जी, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। आप किसी दल की सदस्य नहीं है और आप यहाँ पर बैठकर जो है वो बोलेंगी और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे इस तरीके की महिलाओं को। आपने अपना मानवाधिकार के नाम पर लेकर कैंडल चली जाती है। अपने घरों को पहले देखें, पहले अपने घरों। Will you allow me to speak? You have made your point. You have made your point. अपने देश के जस्टिस पर भरोसा कर। Okay, you made your point. Let her respond. किस औरत को जस्टिस मिला है इस देश के अंदर? किसको नहीं मिला है? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी से आपको जस्टिस दिखाई दे रहा है। उसके पहले आप कभी कैंडी लेकर निकली थी? आप चलिए भरोसा दिलाने। अरे आपको भी ज्यादा मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप ज्यादा, आप लोग मानवाधिकार के नाम पर जो ढोंग करते हैं, जो समाज सेवा के नाम पर नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, उनके पर आप गई थी वहां मिलने? अगर नहीं जफर जी, रंजना जी एक बात का जवाब दे दे हमको, उनके परिवार से संवेदना जताने ये गई थी या नहीं गई थी? बता दें हमको। आप गए थे, देने से नहीं होगा। Ashwini ji and Ranjana ji, I have to go to Yashwardhan Azad. Yashwardhan ji, police will file a charge sheet eventually, but since a lot of evidences would have got damaged, it's not just the house that was the resort that was bulldozed, but an angry mob later set it on fire. So what is left now? This is a very strange situation, and that could make the charge sheet very weak, and that could eventually impact the investigations. If you can unmute, yeah. Yes, please speak on. Yeah. इसमें सबसे पहली बात यह है, विवेचना में
कि जो कि प्राइमरी एविडेंस की बात है। अब मैंने सुना है कि पुलिस ने रिमांड के लिए अप्लाई किया है और जेल से ये अक्यूज उनके पास आएंगे, वो उसे घटनास्थल पर ले जाएंगे और घटनास्थल से संबंधित जितने ही साक्ष्य सबूत है उसको वो एकत्रित करेंगे। इससे जरूर हमें फायदा मिलेगा, ताकि इसको सप्लीमेंट्री एविडेंस जो कि वहां से मिला है। पहली अच्छी बात जो हुई है वो भी मैं कह दूं कि रेणुका जो एक डीआईजी हैं और जो कि एसआईटी को लीड कर रही है, वो इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है और उन्होंने ये कहा है कि घटनास्थल तो खैर वहां है जहां से उन्हें ठेला गया, वो जो जगह है रिजॉर्ट में कमरे से सारे जो सबूत हैं वो खंगाल लिए गए हैं, ऐसा एएसपी ने कहा है। तो मैं उनकी बात को मानता हूं अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्टिव एविडेंस है। जैसे मान लीजिए उनका मोबाइल रह गया, बस्ता रह गया, चीजें रह गई जिसे वो मैच करेंगे। मुझे आशा ये है कि अभी देर तो हुई है, जरूर देर हुई है, जिससे कि क्षति होगी अनुसंधान में, लेकिन इससे जो एविडेंस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ रहा है। और एक बात और है कि पुराने जो एम्प्लॉइज हैं उनसे भी स्टेटमेंट्स में काफी चीजें उन्होंने एकत्रित की हैं। अब जो चार्जशीट दिया जाएगा, चार्जशीट में अब ये देखना है कि प्राइमरी एविडेंस जो है, यानी कि स्पॉट से कितनी क्या वो पता लग गया है वहां पे इनके इंटरोगेशन से, तो वो चीजें अगर जब्त हो गई हैं तब मैं समझता हूं कि अनुसंधान सही तरह से पूरा हुआ होगा। तो चूंकि अब एक एसआईटी लगा दिया गया है, एक डीआईजी लगा दी गई है और सारी चीजें अब विधिवत हुई हैं जो कि हो जानी चाहिए थे पहले। एक बात और बता रहा हूं, आपने कहा कि डीएम के इंटरवेंशन से ही हुआ है। श्रीमान डीएम ही तो इंचार्ज है रेवेन्यू पुलिसिंग के, और कहते हैं पटवारी और ये राजस्व निरीक्षक उसी के अंदर है। राजस्व निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। मैं समझता हूं उनके रोल को और बारीकी से देखना चाहिए। और पुलिस को जब 3 दिन के बाद कहा गया तो पुलिस ने रिएक्ट तो किया, लेकिन वो 3 दिन का जो समय था उस देर की अभी क्षतिपूर्ति करनी होगी। Right. Ranjana ji, the murder of Ankita obviously would have jolted the dreams of many young women. There are so many young women who come from rural areas and who go to cities and towns to make a better future. But incidents like these are certainly shocking for girls like them who want to really move out and pursue their dreams. Well, certainly. I mean, also after the COVID, you see so many women have lost jobs. Millions of women are out of the job market. And this is not my statement. These are well studied, carefully looked into researches which are talking about so many women losing the job. And now when you have, and you want बेटी पढ़ाओ, you want बेटी बचाओ, then if बेटी पढ़ाओ, then पढ़ लिख के लड़कियां करेंगी क्या? What will they do? They will go for jobs. And look at the kind of insecurity there is in the job like this in small city towns. What kind of a life our young girls should dream of? They should dream of exploitation. They should dream of that they will be raped, they will be killed, murdered for doing it, and they will be asked to deliver special services. What is all this? If there was some kind of situation, and the girl who worked before her said that this place was full of drug, prostitution, they used to bring girls there, all kinds of things were happening in this resort. And I want to stress the point that do you have any kind of a SOP for running a resort in Uttarakhand? Anybody and everybody can open a resort. Anybody and everybody can start spa, massage parlors. What is all these places? These are the places where women get exploited. These are the places where women are being brought, trafficked, and being used for sexual purposes. So in this kind of a situation, this is shameless to say that the state is doing a lot of things and we are in power. You are in power there. Have you got every resort of that area reviewed? Have you got every resort of areas, some kind of a standard setup, how one should run these resorts? Have you done any inquiry, any investigation of the resorts, what's going on in there? Besides the noise pollution, how the women and girls are getting exploited in these areas? Are you looking into that? मतलब आंख बंद करके बैठ करने से सब ठीक है और हम सत्ता में इसलिए सब ठीक है, ये नहीं चलेगा। लड़कियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आप जितना चीखे चिल्लाएं। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है, और इसकी कोई भी करने के लिए सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए, बार बार कहा जा रहा है लेट हुआ है।
और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए थी कि रिमांड पर उसी समय लेना चाहिए था। क्यों भेजा उनको जुडिशियल कस्टडी में? क्यों नहीं पूछताछ की उसी समय? But let him respond. Let Ashwini ji respond to the issue of resorts that you raise. अश्विनी जी, क्या इसके बाद एक रिव्यू होगा? कम से कम ये जो रिजॉर्ट है ये कहाँ पे है, कितने हैं, क्या इनको कोई परमिशन मिली है? ऐसे कोई इंसिडेंट के बाद एक रिजॉर्ट को डिमोलिश करना, बेहतर ये ना हो कि सारा एक सिस्टम को एक दोबारा से एक रिव्यू करके पता लगाया जाए कि ये चीजें होती ही क्यों है पहले? देखिए जफर जी, उत्तराखंड एक बड़ा शांत प्रदेश है और शांत से वहां पर जो है एक टूरिज्म वहां पर डेवलप है। सब लोग पर्यटक आते हैं, अपना जैसे भी चल रहा था बहुत कायदे से शांति से चल रहा था। ये दुर्घटना हुई, सरकार फिर सजग हुई है, पहले से होना चाहिए, कोई उसमें ऐसा नहीं है। मगर 10 रिसॉर्ट को सील कर दिया गया है, 19 रिसॉर्ट का चालान कर दिया गया है। अब कार्यवाही जो तेजी से होनी चाहिए वो हो रही है। कहीं पर चीजें जो है, चाहे उसको सस्पेंड किया गया है लेखपाल को, अब किसके आदेश पर किया गया उसकी जांच होगी। अगर उस लायक उसने गलत किया होगा, जांच में गलत पाया जाएगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सिस्टम तो यही होता है कि पहले सस्पेंड कीजिए, उसको कार्य से हटाइए, उसके बाद फिर उसके खिलाफ जांच कीजिए, आगे बढ़े। रही बात कहने की कि अगर महिलाओं के खिलाफ बड़ा अत्याचार हो रहा है, देश में ये हो रहा है, तो टेलीविजन पर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, कैंडल लेकर जाने से कुछ नहीं होता है। बहुत से पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जफर जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जफर जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, और मेरे बीच में तो पिछली बार रंजना जी मेरा पूरा टाइम खा गई, मुझे तो चुल्लू भर पानी में उन्होंने डुबा दिया, उन्होंने मुझे चुल्लू भर पानी में डुबा दिया। तो इस तरीके से जो है, अगर देश के बारे में जो सोचेगा, जो जिस तरीके से अगर आपको करना है तो आप एक सरकार को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन टेलीविजन पर बैठकर और यहीं पर सारा जो है, जो पुलिस को काम करना है वो यहाँ पर बैठकर अगर मीडिया करने लगे, सामाजिक कार्यकर्ता करने लगे, हम लोग करने लगे, तो फिर पुलिस का क्या काम है? हाँ, पुलिस ने जो कमियां हैं, जैसे आजाद साहब ने बताया कि 3 दिन लेट हुआ है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सच है। अगर प्रशासन ने लेट किया है तो उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन वहां डीजीपी साहब और जो आईजी हैं, दोनों लोगों ने बहुत कठोर निर्णय लिए हैं, बहुत कायदे से जांच हो रही है। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको जरूर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर रेपिस्ट की राजधानी है, क्यों नहीं जाकर कोई, अभी 3 घटनाएं मैं गिनाता हूं। अशोक गहलोत जी ने जो कहा था राजस्थान में लड़कियां अपने मन से चली गई, ये छोटा रेप है। रंजना जी गई थी क्या उनके घर कैंडल लेके, या उनके घर संवेदना व्यक्त करने, या उनके ऊपर कभी कुछ काम किया, या इनके जैसी कोई भी महिला? मैं कुछ नहीं कहना उसमें, बंद कराइए। बकवास नहीं कर रहा हूं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए। बकवास आप कर रही है, या बैठकर बकवास आप कर रही है रंजना जी, बकवास आप कर रही है, और आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ। और जी आप बकवास करेंगी, मैं सुनूंगा। अश्विनी जी, can I go back to कि बकवास करके चैनलों पर बैठकर जो आप लोग नाटक करते हैं, ड्रामा करती हैं, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर। यशवर्धन जी, you said that you raised the issue of resorts. ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमें नहीं, आप जैसे कि चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए कहेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। महिला होने का क्या मतलब है? महिला होने का ऐसे can you hold on and can नहीं जफर जी बार बार वो बोल रही हैं और मुझे आप दबा रहे हैं। आपने कितनी बार उनको बोला है? हम सुनने नहीं आए हैं, हमको भी अपने पार्टी का पक्ष रखना है। और यहाँ बैठकर कोई महिला कहेगी चुल्लू भर पानी, मैं डूबने नहीं जा रहा हूँ, साथ में उसको भी लेकर डूब जाऊंगा। Acha, Yashovardhan ji, you raised the issue of resorts, and he says that system has got alerted, and now some action is being taken. Some of the resorts have been sealed. But do you think it is just because this incident happened, and after some time things will be back to square one, and it will be business as usual? Nothing will change. That is what has happened in the past, not related to this incident, not related to this state, but that is generally the way we work. देखिए, आपने बहुत ही सटीक बातें कही। मैं 3 चीज कहना चाहूंगा एंड में। पहली बात, जो रिजॉर्ट्स की बात है, हमारे यहाँ जो बिजनेस मॉडल है वो कभी बदलता नहीं है। इतना जरूर है, कुछ सरकार कुछ प्रयास जरूर करती है, हर सरकार ये चाहती है कि हमारा बिजनेस मॉडल अच्छा चले, टूरिस्ट आए, सब कुछ आए, लेकिन हमारे यहाँ जो बुनियादी चीजें हैं वो नहीं चलती। रिजॉर्ट्स की जहां आपने बात की, रिजॉर्ट्स पूरे देश में कोई इलीगल है, इलीगल अगर है तो ठीक नहीं होते हैं। जब बड़ी घटना होती है तो लोग रिजॉर्ट्स के बारे में वो नोटिस देने लगते हैं।
लेकिन रिजॉर्ट्स में महिलाओं का शोषण और उसकी जानकारी आते रहती है। मेरा ये कहना है कि सरकार के सिर्फ ये डीएम को कह देने से ये चीजें नहीं सुधरती। मैं समझता हूं कि यहाँ पे ये बहुत आवश्यक है कि जितने विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनजीओज हैं, उनको ये अपने नेटवर्क में ये अवश्य कहना चाहिए, जितनी महिलाएं यहाँ कार्य कर रही हैं, कि जब भी आपके साथ किसी तरह का शोषण हो, किसी तरह का ये आपको उल्टे सीधे मैसेज व्हाट्सएप पे मिले, तो आप देर नहीं करें। वो हिचकती हैं तो उन्हें इन नेटवर्क के जरिए उन्हें एम्पावर किया जाए और उन्हें ये किया। पहली बात तो ये कहूंगा। दूसरी बात ये है, ये दूसरी जो समस्या है हमारे यहाँ, जो बुनियादी समस्या है, कि स्थानीय अफसर जो हैं, चाहे वो फॉरेस्ट के हों, एक्साइज के हों, पुलिस के हों, राजस्व के हों, उनके ऊपर स्थानीय नेताओं का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। ये इसी स्टेट में नहीं है, सारे स्टेट में। मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इसको अनदेखी कर देते हैं। हर जगह का सवाल ये। और तीसरी बात मैं ये बताऊंगा, अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में वो जो रेवेन्यू मॉडल है उसे खत्म करें और पूरे पुलिस सिस्टम को लागू करें। क्या आपको मालूम है जफर इकबाल जी, शाही जी, आप भी सुन लीजिए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये कहा था और गवर्नमेंट को निर्देश दिया था कि आप वो पुलिसिंग सिस्टम वहां पे चालू करें, तब भी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये नहीं है कि नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं इसकी जरूरत क्या है, भी समय आएगा तो कहेंगे। और बाबू ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहता है तो नेता भी कहते हैं हाँ जब समय आएगा तो देखा जाएगा। इसलिए ये समय है कि इन बुनियादी चीजों पे हम ध्यान दें। रिजॉर्ट्स के बारे में मैंने आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया, और ये बहुत आवश्यक है कि उत्तराखंड जो कि टूरिज्म पे रहता है, जिंदा है, बल्कि ये आवश्यक है कि रिजॉर्ट्स के बारे में पूरे रूल्स बनाए जाएं और रूल्स का कंप्लायंस भी सही तरीके से किया जाए। Well, important points that you raised before we wrap up. Last comments from Ashwini ji and Ranjana ji. Ashwini ji, first to you. चीजें जो हुई हैं अभी, यशोवर्धन आजाद साहब ने ठीक पॉइंट बताए। सब जगह होता है, जब देश बनता है, प्रदेश बनता है, तो बहुत सी कमियां होती हैं। और मैंने जो कहा कि बहुत शांति से वहां टूरिज्म चल रहा था, और ऐसी कोई घटना, जब घटना हुई, सभी लोगों की आंखें एक तरह से चौंधिया गई कि ऐसा कैसे होगा एक शांत प्रदेश में। लेकिन जिसने किया उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, उसको की जाएगी। और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है आने वाले दिनों के लिए। जैसा यशोवर्धन साहब ने कहा, ये सच कहा है। वहां की सरकार को अगर ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है तो लागू करना चाहिए। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और वो जरूर लागू करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मामले में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, और जो आदेश उन्होंने दिए थे, वो एक बेमिसाल है। और वहां की पुलिस भी तत्पर है बाकी चीजों को, क्योंकि क्रिमिनल तो पकड़ लिए गए, लेकिन उसके पीछे बहुत सी चीजें निकलती हैं, वो जल्द से जल्द सुलझा ली जाएंगी और जो दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा। Last word to you, Ranjana Kumari. Things again, I mean, like number one is that ensure, and I will appeal to the police officer, and fortunately this is a woman police officer, to ensure that all investigations are done properly, and this case should reach to a logical conclusion, not like all the other cases which are hanging and there is no justice that has been delivered to those cases. And I can count at least 10 cases of this UP, Bihar, all the states which is happening in the country. Now, other thing which is very important, second thing which is very important, is to create a kind of system to monitor. Just now we are hearing that 8 of the resorts have been closed. 15 have been, some kind of a notice has been issued. So what was happening so far? That means that there is a lot of cesspool there. Please clean that up. If you want Uttarakhand to remain a place where tourists will come and women will feel safe, then please clean that up. And finally, also, there has to, some insurance should be given to the family, the women of that state, that there will be some kind of a vigilance where these women will not be exploited. Young girls can go for a job and they will not be exploited there. Nobody should be allowed to act the way these fellows acted with this young girl. 18, 19 is no age, but she did work because her family needed that money. That is why she went to work.
And look what happened to her. So please ensure that every girl in Uttarakhand is, or in the country, is protected, much more so in a state which is infested with all kinds of things in name of tourism. Yes, there should be a logical conclusion to this case, and also justice should be done. This was a 19-year-old girl. She had dreams, big dreams about her life. She's just at the start of her career, and this tragedy has befallen that family. That's all we have on today's show. Thanks to all our panelists for joining us. Thanks for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.